After explaining what is pre-consolidated, normally consolidated, and under consolidated soil, and how to determine the pre-consolidated soil by using graph. So next, one more important topic is there, that is Terzki's theory of one-dimensional consolidation. This is very, 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 very important, but during your offline classes time, during offline exam, because this is a theory, this little theory cannot ask in the multiple choice questions. So maybe some assumptions he may ask you, but as it is my duty to teach you, I will teach you. But what I am observing is most of you people are not showing interest. मेरे सामने या कॉलेज में घूमते रहते लेकिन क्लास को अटेंड नहीं करते. So if you don't show the interest, मैं भी जल्दी जल्दी खत्म करके सिलेबस खत्म हो गया बोल सकता हूँ. इतना चिल्ला चिल्ला के रिपीट कर करके बोल के तुमको नोट्स दे के इतना समझाने की जरूरत क्या है मुझे भी. If you people are not interested, means I will also show less interest and complete the syllabus. Okay, now coming to Terzki's theory of one-dimensional consolidation. The theoretical consultation of the consolidation process was developed by Terzky. Almost every work is done by Terzky only in the geotechnical engineering. In the development of the mathematical statement of the consolidation process, the following assumptions are made. As usual, in strength of material also you have studied that. So before deriving any equation or before analyzing anything, so what we do is we assume certain things. We assume certain things. And what are those assumptions that is written here? The soil is homogeneous and fully saturated. Of course, soil homogeneous होना चाहिए क्योंकि अलग-अलग टाइप के soil आ गए तो consolidation हम मालूम नहीं कर सकते. तो हमारे derivation के लिए what we are assuming that the soil is homogeneous and fully saturated, means each and every pore is filled with water. If it is not fully saturated, how it is going to be get consolidated? Because consolidation itself is expulsion of water. If it is not saturated, it is not going to be consolidated. That is why our assumption is the soil is homogeneous and fully saturated. The soil is homogeneous and fully saturated. Second, soil particles and water are incompressible. Soil particles and water are incompressible. ये तो मालूम ही है आपको, water तो already है. तो what we are assuming here that soil is not showing any elasticity property here. It is incompressible, as well as water is also incompressible. This is our second assumption. Third assumption is the deformation of the soil is entirely due to change in volume. Whatever the change in deformation of the soil is taking place, it is due to change in value, means bulk modulus is taking place here. If you remember in strength of materials, bulk modulus. Okay, so the deformation of the soil is entirely due to change in value. Then Darcy's law for the velocity of flow of water through soil is perfectly valid. That is, V is proportional to I, or V is equal to Ki, Darcy's law. So that is valid for this particular type of soil. Next, coefficient of permeability is constant during consolidation. Coefficient of permeability is constant during consolidation, means it is not changing. Load is applied in one direction only. Load is applied in one direction only, means not in two directions, and deformation occurs only in the direction of the load application. So other side load is not applied, it is applied only on one side. Excess pore water drains out only in the vertical groove. So whatever the things we are taking are in vertical direction only, horizontal direction is confined here. So these are the various assumptions we make before deriving the Terzky's theory. So ये derivation मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप नहीं पढ़ते, मेरे को मालूम है, लेंदी है बहुत, और ना आप प्रैक्टिस करते, क्योंकि वो आने वाला है ही नहीं. हाँ,
Okay, so these are the various assumptions. Once again, I will repeat it. The soil is homogeneous and fully saturated. This is clear to you. Soil is incompressible. Water is also incompressible. Whatever the deformation of soil little bit takes place, it is due to change in volume. Darcy's law is completely applicable here. Darcy's law is completely applicable here, and then coefficient of permeability is constant. This coefficient of permeability is a constant, and load is applied in one direction only. Load is applied in one direction only, and deformation occurs in the other direction. And whatever the excess pore water pressure is drains out in the vertical direction. Drains out in the vertical direction. Still are there. So the boundary is a free surface offering no resistance to the flow of water from the soil, and the change in thickness of the layer during consolidation is insignificant. So when consolidation takes place, of course, there is some change in thickness, so that we are considering insignificant here, though it is significant because of consolidation only settlement takes place. But what we are assuming here is this is insignificant. This is insignificant, and the boundary is a free surface offering no resistance to the flow of water from the soil. So these are the various assumptions we make before deriving the Terzki's theory. And if you would have faced the offline exams, surely these assumptions and this derivation was must. Definitely. Okay, then the time lag, last one is the time lag in consolidation is entirely due to the permeability of the soil, and thus the secondary consolidation is disregarded. मतलब यहाँ पर सिर्फ we are considering only primary consolidation. Secondary consolidation is we are neglecting totally. We are neglecting totally. Then this derivation is there. Derivation of differential equation. Derivation of differential equation. Okay, just I will read it because आप लोग इतना सुनते नहीं, पता नहीं पेशेंस है नहीं, चुप मैं चिल्लाते जा रहा हूँ. Let a saturated clay layer of thickness H lie between two layers of sand which serves as two drainage forces. मतलब ऊपर sand है, नीचे sand है और नीचे clay है. Sand है इसका मतलब दोनों तरफ drainage facility है. आपका क्ले में से कंसोलिडेशन होके जो भी सॉइल है वो सैंड में से बह के जा सकता है ऊपर और नीचे. इट इज टू सच कंडीशन इज कॉल्ड two drained condition, which is called two drained condition. Let a saturated clay layer of thickness H lie between two layers of sand which serves as two drainage faces. When the clay layer is subjected to a pressure increment, when the clay layer is subjected to a pressure increment delta sigma, the pressure increment is first borne by pore water, so that at initial time the excess pore pressure U is equal to delta sigma at all points along the depth of clay layer, and is plotted a line AB in figure. As plotted line AB in figure. So शुरू में प्रेशर 0, देखिए ये दो सैंड के फेसेस है और ये बीच में क्ले है, इसका हाइट है EH, इसका हाइट है EH, ये मान के चलो. पता नहीं क्या पढ़ते आप लोग. हाँ, तो शुरू में क्या बोल रहा हूँ, let a saturated clay layer of thickness H lie between two layers of sand which serve as two drainage faces. When the clay layer is subjected to a pressure increment delta sigma, the pressure increment is first borne by pore water, so that at initial time to the excess pore water at all points along the depth of the clay and plotted on the line AB in the figure. Okay, so what he says that this is the two faces, this is the clay layer, this is sand one, this is sand, so it is drainage face, it is drainage face. So whatever the force you are applying in the beginning, that is taken by water here and shown by a line AB like this, shown by a line AB. Drainage of pore water in the soil layers starts and excess pore water at the top and bottom boundaries of clay layer. Drainage of pore water into the soil layers starts and excess pore water pressure at the top and bottom boundaries of clay layer drops down to 0 and remains so at all the times during the consolidation process. Okay, at the end of the consolidation process, say T is equal to TF, this is the time when consolidation ends. The excess pore pressure will have been completely dissipated, so that U bar equal to 0. Means pore pressure is 0 now. Once the entire water will go, means pore pressure is 0.
at all points along is represented by a line CD as shown in the figure. At any intermediate time t between T0 and TF, part of consolidation of delta sigma is transferred to all the particles by this one. बहुत सिंपल है, आप समझो यहाँ पर देखिए एक सॉइल ये क्ले लेयर है, हाइट h है, दोनों साइड ड्रेनेज स्पेस है. जब शुरू में कोई भी प्रेशर आता that is entirely taken by water and that is shown by the line AB. That is shown by the line AB. And slowly when this soil gets, I mean expelled, water gets expelled, so that pore water becomes in the end 0, and this is shown by the line CD. And in between any condition is there. शुरू starting में time है t is equal to T0 and consolidation खत्म होने के बाद time है t is equal to TF. T is equal to TF. Whatever the pressure coming here, entirely taken by water here, and then water becomes 0. When consolidation takes place and entire water goes, then this is shown by a line CD. At any time, the hydraulic head H corresponding to the excess pressure U bar is given by H is equal to U bar by gamma W. This you know very well. Head is given by U bar by gamma W. The hydraulic gradient I is given by the dou H by dou Z, and this is given by, if you differentiate this one, no, so 1 by gamma W he is taken as constant. U को with respect to Z differentiate करो, dou U by dou Z. This is equation 2. याद रखो H is equal to U bar by gamma W है, इसको हम differentiate कर रहे ग्रेडियंट, और हेड ग्रेडियंट को इसको डिफरेंशिएट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू Z, dou H by dou Z. या 1 by gamma W एक कांस्टेंट रहता वाटर का, 1 by gamma W, डिफरेंशिएट U को करो विद रिस्पेक्ट टू Z, इट इज dou U by dou Z. दिस इज इक्वेशन 2. Now applying Darcy's law. What is Darcy's law? V is proportional to I or V is equal to Ki. Applying Darcy's law, the velocity of flow of pore water due to this hydraulic gradient is given by V is equal to Ki, or now I is this much, so K as it is रखो और I की जगह रखो ये फॉर्मूला, तो ये आ जाता आपको V is equal to K by gamma W dou U by dou Z. So please check these 3 equations. कुछ समझ में आया तो देखो तीनों इक्वेशन देखो, 1 मिनट टाइम देता हूं मैं आपको. यस, एनी डाउट्स? या तो आपको समझ में आया या आप या सुन रहे नहीं? H is equal to U by gamma W, ये तो क्लियर है आपको. दिस इज इक्वेशन 1. इसको विथ रेस्पेक्ट टू Z करो तो आता आपको क्या, ग्रेडियंट I is equal to dou H by dou Z, and this equation you will get equation 2. एक बार I आने के बाद V is equal to K into I की जगह ये फॉर्मूला रखो K as it is, so you will get this equation. You will get V is equal to K by gamma W dou U by dou Z. Now the rate of change of velocity, what you got is V को फिर differentiate करो तो rate of change of velocity होता, और if you remember that is nothing but the rate of change of velocity along the depth of the layer. It is acceleration actually, and it is given by dou V by dou Z. K is constant, gamma W is constant. It is U को फिर एक बार आप differentiate करो dou 2U by dou Z square. This is equation 4. This is equation 4. Let us consider a soil element of size dx of width dy perpendicular to the plane of figure. मतलब यहाँ पर आप एक soil का particle consider करो
यहाँ पर है ये, इसका थिकनेस है dz और इसका विड्थ है dx। यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ वाटर v है और जब यहां से निकल रहा नीचे से, दैट इज v प्लस डो v बाय डो z इनटू dz। लाइक दिस यू अज्यूम दिस। Let us consider a soil element of soil size dx dz of width dy perpendicular to the plane of figure. If v is the velocity of water at entry, the velocity at exit will be v plus dou v by dou z into dz as indicated in the figure. The quantity of water entering the soil element in unit time is v into dx into dy. Actually, we know the quantity of water means q is equal to area into velocity. So v is velocity, area is dx dy. So v into dx dy. और जहां एग्जिट हो रहा वहां पर वेलोसिटी इतना है और एरिया dx dy है, तो ये डिस्चार्ज एट द एंट्रिंग और ये डिस्चार्ज एट द एग्जिट। इसमें से माइनस करें तो जो वाटर लॉस हो गया that you will get it. Hence the net quantity of water squeezed out of the soil element in unit time is given by this discharge minus this discharge. And if you simplify this v dx dy get cancels, so you will get change in discharge is equal to dou v by dou z dx dy dz. प्लीज इसमें क्या समझ में आया नहीं आया बोलो मुझे, अगर आप सुन रहे तो। नहीं सुन रहे तो रहने दो। ओके, वेरी गुड स्नेहल, एटलीस्ट समबडी इज लिसनिंग। ओके, तो कुछ नहीं यहां पर देखिए, पहले तो क्या करें आप, एक बार और रिपीट करता हूं, h इज इक्वल टू ये तो मालूम है आपको। यहां पर क्या करा है, हमको आई निकालना है। आई कब मिलता, ग्रेडियंट, दैट इज फॉल इन हेड बाय लेंथ। सो फॉल इन हेड बाय लेंथ इज गिवन बाय, इसको विद रिस्पेक्ट टू z करो तो आप गामा w कांस्टेंट हो जाता है, u को विद रिस्पेक्ट टू z करो, इक्वेशन 2। v इज इक्वल टू के आई, ये डार्सीज लॉ है, ये क्या है, डार्सीज लॉ है। तो k की जगह, सॉरी i की जगह ये सारा ला लो, तो k बाय गामा w ये आ जाता, दिस इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएशन करो आप, डो v बाय डो z आता, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो दिस इज द वैल्यू, ये इक्वेशन 4। उसके बाद आप ये कंसीडर कर रहे, यहां पर वेलोसिटी एंटर हो रहा, यहां पर वेलोसिटी एग्जिट हो रहा, यहां पर वेलोसिटी v रहता, ये एग्जिट की जगह इतना वेलोसिटी रहता, यहां डिस्चार्ज रहता v into dx dy, दैट इज q is equal to a into v, और यहां पर रहता दिस वेलोसिटी into dx dy। यहां से यहां आने तक कितना पानी लॉस होता, दैट इज गिवन बाय दिस डिस्चार्ज माइनस दिस एंट्रेंस डिस्चार्ज, दैट ओनली आई डिड इट। एंड व्हेन आई सिंप्लीफाइड, so we will get delta q is equal to dou v by dou z dx dy dz. The decrease in the volume of soil element is equal to the volume of water squeezed out. And एक हम फॉर्मूला निकाले थे इससे पहले, आप नोट करो, निकालो, पीछे है, डेल्टा v is equal to minus mv v naught delta sigma. This is equation 6. So now change in volume per unit time is given by this with respect to t. इसको आप विथ रेस्पेक्ट टू टी करो, वॉल्यूम की जगह ले लो dx dy dz, और इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करो। अब इक्वेशन ये है 7 और इक्वेशन 5 है आपके पास, ये दोनों भी एलएचएस सेम है। इनको अगर से आप इक्वेट करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड दैट डो वी बाय डो जेड इज इक्वल टू ये वैल्यू आता है mv into this much. Dou v by dou z is equal to, this is equation 8. Now delta sigma is equal to delta dash plus u, whatever this adding. So effective pressure is equal to total pressure minus pore pressure, ये भी मालूम है हमको. So now इसको with respect to t करने से equation 9, substituting in equation 8, this equation को equation 8 में substitute करो, in this equation ये जो वैल्यू है उसमें सब्स्टिट्यूट करो, you will get dou u by dou z is equal to mv dou u by dou t. This is equation 10. Compare करो equation 4 and 10, you will get this equation, and dou u by dou t is equal to 1 k by mv gamma w into this much, and this value is constant and taken as CV or coefficient of consolidation. So dou u by dou t is equal to Cu dou 2u by dou z square, where CV is given by this formula, and this derivation is called Terzki's one-dimensional
वन डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब इसको आपको मतलब करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना पड़ेगा। कुछ डाउट है तो पूछो। डाउट क्या, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। दिस इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। एक एक पेज निकालता हूं मैं आपको, यहाँ के तीनों इक्वेशन समझ में आए क्या, देखो आप पहले, और लिख लो आप पेपर पे, तीनों इक्वेशन लिख लो। 5 मिनट टाइम देता हूं मैं आपको, कोई बात नहीं, आज इतना ही। इसके और आगे क्या है देखेंगे। इक्वेशन है, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, खत्म ही, इतने पे खत्म ही करता हूं आज मैं, मोस्ट प्रोबेबली। आई विल स्टॉप द क्लास हियर इटसेल्फ टुडे। आई एम हैविंग सम एडमिशन वर्क्स। नहीं तो पढ़ाओ बोलते हैं, और स्लाइड में देखेंगे, पहले आप ये समझना तो समझो, देखेंगे पहले। सो व्हाट अबाउट दीस थ्री इक्वेशंस, यू गो थ्रू दिस एंड टेल मी व्हाट आर दीस थ्री इक्वेशंस, वेदर यू फॉलोड इट और नॉट। लिख लो आप, टाइम देता हूं मैं आपको। देखो तीनों इक्वेशन लिख लो पहले, तो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। h इज इक्वल टू दिस मच, ये इतना, और ये v इज इक्वल टू इतना। इसको विथ रेस्पेक्ट टू t करो, दैट इज इक्वेशन 4। z करो, दैट इज इक्वेशन 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम आगे कंपेयर 4 करते हैं। उसके बाद डिस्चार्ज एंट्री में कितना है, डिस्चार्ज एग्जिट में कितना है, दोनों निकालते, q इज इक्वल टू a इंटू बी, फिर माइनस करते, तो आपको ये पांचवा इक्वेशन आता। ये 5 इक्वेशन आपको आ रहे क्या, देखो प्लीज, जिसको पढ़ना है। Click down please। ठीक है, पांचों समझ में आ गए। तो 5 के बाद ये 6th है, ये कैसा आया, मैं आपको पिछले स्लाइड्स में जाओ, वहां पर ये फॉर्मूला मैं डिफाइन किया हूं, चेंज इन वैल्यू मेथड से एमवी भी डिफाइन किया हूं, तो वहां पर ये इक्वेशन मिलता 6th। अब हम इसको विद रेस्पेक्ट टू टी करो, तो यहाँ ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की जगह v की जगह लिख सकते हैं dx dy dz, और इसको विद रेस्पेक्ट टू टी करो। दिस इज इक्वेशन 7। 5 और 7 को कंपेयर करो, तो देखो आपको 5 और 7 को कंपेयर करें तो क्या आता। फिफ्थ कहाँ है आपके पास, यहाँ है, डो वी बाय डो जेड की जगह, ये इधर भी dx y dz रहने से, कंपेयर करने से डो वी बाय डो जेड इज इक्वल टू ये वैल्यू आता। मतलब डो वी बाय डो जेड की जगह ये वैल्यूज आती, क्या लिख लो, दिस इज इक्वेशन 8। दिस इज इक्वेशन 8। उसके बाद ये तो है इफेक्टिव प्रेशर, टोटल प्रेशर है, ये इसको विथ रेस्पेक्ट टू टी करो, ये आ जाता, ये सब्स्टिट्यूट करो 8 में, ये आ जाता, फिर 4 और 10 को कंपेयर करो, तो ये इक्वेशन आता, डो यू बाय डो टी इज इक्वल टू दिस मच, एंड डो यू, ये आ जाता, cv इज इक्वल टू k अपॉन, दिस इज द denotes the coefficient of consolidation।
Yes. So shall I see what is the next? So this is Terzgi's theory of this derivation is very very important. Please practice it. और बहुत easy way में मैं करके रखा हूँ इसको. आप practice करो. कुछ doubts है तो कुछ और इतना lengthy भी नहीं है. दिखने को लंबा दिखता बहुत, लेकिन बहुत important था. Offline में sure question था. Offline में sure question था. Let me go for next slide. Let me see what is it. तो अब हम कहाँ तक आ गए? 35 तक आ गए. Okay. 36. Oh. Yeah, further is there, it is. Okay, and then numericals are there. So I hope करेंगे, कल करेंगे. 36 numericals है. इसके बाद 37 में consolidator है, combustion flavor. All the formulas I wrote here. Consolidated test है. Okay, anyway, I will stop it here only. Still 2 periods. After 2 periods, most probably 4 periods. Tomorrow I don't have class. On Monday and on this one, which on Monday and Wednesday, Tuesday, I will complete this unit, 2 units. Then we will go for 5th one, shear strength. Okay. So today I will share 35. One B Geetanjali Bagal, 6B Priyanka, 12A Snehal, 12B Snehal, 13B Dhanashri, 20B Sneha, 21A Prathamesh, 22A Shubham, 23A Sunil, 24B Vaishnavi, 25B Sudharani, 27B Sonali Sawant, 31A Yogesh Gaikwad, 37B Samadhan, 37A Suraj, 38B it is Swapnil, 42B Vishal, 43A Swapnil, 46B Uday, 56A Shubham, 58A Samadhan, 59B Amor, B23 Aishwarya Mane, then all. Okay. So one more thing, what I wanted to tell you that I have given you 2 assignments. 18 18B, okay beta. Aishwarya Mane got आया 18 B18, okay. तो एक और चीज बता रहा था मैं आपको, 2 असाइनमेंट दे चुका हूं मैं, उसका लिंक आजकल मैं भेज दूंगा. पहले आप लिख के रेडी रहो और इमीडिएट उसमें अपलोड करो. ये सब देख के, आपका अटेंडेंस देख के मैं आपको, आप मेरे हाथ में आपके बहुत मार्क्स है, याद रखो. आप प्रैक्टिकल मार्क्स है, उसके असाइनमेंट के, इसके इंटरनल के, करीब करीब 150-200 मार्क्स है मेरे हाथ में. मैं जो रेगुलर है, जो क्लास को आते, जो डीएसओ काम करते, उनको ही मार्क्स दूंगा, बाकी के लोगों को नहीं.
ओके, नाउ यू कैन लीव। सो जिसका भी है जा सकते। आई विल स्टॉप इट हियर ओनली। किसका अटेंडेंस है तो आप मेरे को A36, ऐसा कोई है पर्सनली कुछ प्रॉब्लम था, नेटवर्क इश्यू है तो आप बोल दो मुझे। जनरली आई विल गिव द अटेंडेंस। आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करो या चैट बॉक्स में लिखो या आके गए नेटवर्क प्रॉब्लम है, इफ समथिंग इज देयर। A ओके, स्वप्निल कोले, बट 43 ऑलरेडी गिवन कोले। जो दिए उनको नहीं, जो कोई और है तो है, बाकी के निकल जाओ, जा सकते हो आप लोग।